Hello everyone, this is Gurleen Singh, your maths educator. But today I am going to tell you an interesting fact about science through the world of fireflies. तो सबने fireflies का नाम तो सुना ही होगा. What are fireflies? This is a species of insect that produce light during the night. कि जुगनू रात को चमकते हैं. ये तो सबने सुना ही होगा. जुगनू का नाम तो सुना है, right? But the first question is, do they illuminate only at night? No, the answer is no, because दिन में भी वो लोग चमकते हैं. दिन में also they can produce light, but due to the sunlight, due to the rays of the light, we are not able to see the light that they are producing. Right? All over the world, there are around 2000 plus species of fireflies that produce the light. That produce light. But India में सिर्फ 7 to 8 species of light producing fireflies are found. ठीक है? ये जनरली आपको मिलेंगे जहाँ पे इन एन ओपन एरिया नियर द फॉरेस्ट नियर द रिवर डैम्प एरिया में मिलेंगे. ठीक है. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस हॉबी ऑफ कलेक्टिंग फायरफ्लाइज इन अ जार because they produce enough light that can help you read a book at night, right? So where there are abundant fireflies, people do engage in such activities. So in today's video we are going to answer two questions: that how do they produce the light, and second being that what might be the reasons that they produce this light. So let's begin. Okay, so होता क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है फायरफ्लाइज के लोअर एब्डोमेन में. लोअर एब्डोमेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक जहां पे लाइट प्रोड्यूस होती है. जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंटर्स देयर बॉडी थ्रू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकियोलास. ठीक है, लंग्स तो होते नहीं है, तो ऑक्सीजन कहाँ से एंटर करता है? स्किन पे. स्किन के थ्रू देयर आर डायरेक्ट ट्यूब्स कॉल्ड स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकियोलियास, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंटर्स देयर लोअर एब्डोमेन एंड देन इट रिएक्ट्स विद अ केमिकल कॉल्ड लूसीफेरिन. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट प्रोड्यूसिंग एंजाइम called luciferase. ठीक है, oxygen plus luciferin in presence of luciferase produces this light in the bodies of fireflies. Now this whole process is known as bioluminescence. ठीक है, bioluminescence is the process of producing lights. तो सिर्फ fireflies ही नहीं है जो light produce करती है. We have some other animals also that go through this process which we'll talk about later on. Right? Now the next question is कि जब भी लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है. तो क्या फायरफ्लाइज बर्न आउट हो जाएंगी? क्या इतनी हीट से फायरफ्लाइज मरती नहीं है? सो द आंसर इज दैट बायोल्यूमिनेंस इज अ कोल्ड लाइट. ठीक है, जैसे कि बल्ब में भी जब आप कभी किसी बल्ब को जलने के बाद ऑफ करोगे एंड डोंट ट्राई टू टच इट, बट इट इज ऑलवेज हॉट. Why? Because whenever electricity is produced, light is produced, only 10% of the light reaches us और बाकी की 90% जो है ना वो heat produce करने में burn out हो जाती है. But cold light में, that is light that is produced by in the process of bioluminescence, वो 100% light हम तक पहुंचती है and it produce very little heat जिससे fireflies को कोई effect नहीं होता. Right? Okay. So let's talk about that why fireflies प्रोड्यूस लाइट. ठीक है, गॉड ने डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट पावर्स दी हैं, डिफरेंट फीचर्स दिए हैं और उन सबका कोई ना कोई यूज होता है उनकी लाइफ में. सो द फर्स्ट रीजन व्हाई दे शाइन इज दैट टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट जेंडर. राइट? सो फीमेल्स आर एबल टू आइडेंटिफाई मेल्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज व्हेन दे थ्रू देयर फ्लैशिंग पैटर्न्स. ठीक है, किस तरह से वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से लाइट फ्लैश करते हैं, स्पीशी टू स्पीशी डिफर करता है. तो फीमेल फायरफ्लाइज होती है वो इजीली अपनी स्पीशी के मेल को आइडेंटिफाई कर सकती हैं थ्रू द लाइट पैटर्न्स. एंड इट इज अ मिथ, या फिर ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतने ज्यादा फीमेल अट्रैक्ट होंगी टुवर्ड्स द मेल फॉर द मेटिंग सीजन. राइट? some other reasons can be to find food in the dark. Right? क्योंकि अंधेरे में जब वो हंट करते हैं, their light helps us to identify their food. Right? Which is also a very helpful feature. Right? So these are not the only insects or only objects or only animals that are bioluminescent. Some other species like the jellyfish or the squid or some deep sea creatures are known to produce light in the same way. Right? So there are a lot of different kinds of species and creatures in the world which has a lot of different features, but one peculiar of them is the ability to produce light within the body without any electric current or any other unconventional source of electricity. So which in itself is a very interesting thing.
right? I hope you understood the concept and you liked the video. So if you like the video, do use my code SPGSS10 if you plan to purchase the Plus subscription. So thank you everyone. That was all in the video. See you soon.